हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट्स। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है हाउ नॉर्थ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। Hey Tribe, Prishia here, and I'm sure a lot of you are already saying that she hasn't traveled all over the north and south of India. How would she know what the differences are? But from a little bit of the travel that I have been recently doing, and if you've been following me on my social media handles, then you would know where all I have been. These are a few of the very stark differences that I have noticed. After all, this is just my opinion and my observation. I'd love to hear from each and every one of you in the comment section below as well. All of you from the east and the west, sorry for ignoring y'all, but this is about someone else. But I also think that your opinions would be very objective, and I'd love to hear what you have to say. Because after all, our friends from the north and the south, what they have to say, it just might be a little biased. To get a scale of the distance between the northernmost state and the southernmost state, it's the distance between France and Nigeria or Canada to central Mexico. So if the distance is going to be this much, there are bound to be differences even though they belong to the same mother. Yes, there are major differences, especially when it comes to food. The churidar versus the kanjivaram, Hindustani music versus Carnatic music, the lush mountains of the north versus south, and plenty of misconceptions like the color of skin. But hey, these guys, they're from the south, and these guys, they're from the north. The difference between the two has a historical foundation, and if you take a look at this video, then you can see that the south of India was colonized very few times. The Chola kingdom and the early Pandya dynasty, they ruled for a close to almost 1,000 years. Under stable governments, culture, art, architecture flourished. And that's why if you look at any of the dance or paintings from India, the older schools were always found in the south. The north, in the meantime, was constantly under attack, and different empires would rule and erase the previous empire's contribution. When I talk to people, I find that they think of India's history in very blanket terms, of the British, the Mughal, the Marathas, the Rajputs. But from this video, you can see that India, especially the north, was ruled by many different empires. While the Gangetic Plains were fertile, they were also easily accessible through the Khyber Pass. The south, on the other hand, equally fertile, but accessible only by boat. A lot of the boats that did land there, they were merchant boats and not led by armies. With trade came an understanding of other cultures without having to call them masters. Now here's a story that will blow your mind, especially if you've just joined the tribe. People have a tendency to believe that Islam came from the north, but the very first mosque to have been built in India during Muhammad's lifetime was built right here in Kerala. The king of Kerala had heard of Muhammad and set sail to meet him. Even though he didn't manage to convert to Islam, he did promise Muhammad that his people and his followers would have a place of worship right here in the south. And that's where the first mosque ever got built in India. This mosque, it still exists in India. So understand that the British did not give us Christianity and the Mughals did not give us Islam, but it's the merchant vessels that brought these religions to Indian shores. Even though the south did get colonized before the north, the British were very focused on Delhi and Bengal. Yes, they did have centers in Madras, but their relationship with the kings of the south was less disruptive than the north. People from the north were constantly moving from one place to another, while those in the south were allowed to stay, and their roots were deepened even more. Now we all know what happens to deep roots. It makes for the foundation for a really strong tree. Why is it that Kerala and Tamil Nadu are spotlessly clean as compared to UP, MP or Bihar? It comes from education, it comes from culture, and it also comes from having a deeper sense of belonging. People from the south are deeply affected if their natural resources are depleted, and that is why some of the jungles from the south
are richer and greener compared to the north. The north of India, it has two sides to its coin. Because of the constant upheaval that is taking place, the energy, it's always new. There is a survival instinct and a warrior spirit that does kick in, which makes it a little stronger. So compare America to Europe. It's young, new, flashy, and always trying to impress. In our case, Hindi movies with its obviously northern influences becomes the barometer for pop culture in India. Yes, southern movies have caught up, but in today's day and age, it's still easier to watch a Hindi movie in Madurai than to try and catch a Tamil movie in Mathura. So I'm going to end this video with 2 points. I could have spoken about women's safety and thrown a whole bunch of numbers and figures at you. Yes, it would be a very good barometer of a society's progress. But at the same time, we have to understand that Kerala, it was matriarchal. Women over there are much more educated and therefore more empowered. But honestly, this is another whole topic and it could be a whole video by itself. Because they have more peace, different religions are able to exist with one another, and they're also less suspicious of each one's intentions as compared to the North. You could generalize if you wanted to say that South Indians are geeks and North Indians are loud, but in the comment section, let's try and learn from each other. Let's talk about the good and not really focus on the bad. After all, we're all cousins from the same mother. I'm really looking forward to the conversation that is going to start in that comment section below. Don't forget, there's all my social media handles that you can reach out to me as well. Like this video, share this video, and I'm going to catch you guys very, very soon. Ciao. काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। मुझे बड़ा मज़ा आया वीडियो को देख के कि उन्होंने एक्टर से लेके चीज़ों से देख के और हर चीज़ को बताया। और हमने केरला पे एक पहले भी वीडियो पे रिएक्शन दिया था और उसमें मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई थी कि जो है लिटरेसी रेट वहाँ का बहुत अच्छा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे जो जहाँ पे एक एजुकेशन आ जाती है, जहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम आपका ठीक हो जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी बेहतर चीज़ें खुद से बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि कोई भी रिलीजन जो आपस में मिलके खुशी से रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है रहने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ ही होती है कि जो पीसफुल लाइफ है वो कैसे गुजारी जा सके। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। बिल्कुल, जिस तरह मतलब वीडियो की प्रेजेंटेशन थी, दिस वाज ऑसम यार। तो मतलब जिस तरह दोनों पार्ट्स को इस तरह एक्सप्लेन किया था, दोनों इशू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब डिस्टेंस वाइज आप देखिए तो इस तरह कनाडा और पूरे अमेरिका को क्रॉस करते हुए नीचे मैक्सिको तक आप देखो तो ये बहुत बड़ा फासला बन जाता है। तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में इतना ही फासला है जिस तरह बताया गया था वीडियो में। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा इसमें लाजमी बात है कि कल्चरल डिफरेंसेस और रेस के बेस पर डिफरेंसेस और रिलीजियस वाइज और दूसरी कल्चरल तो स्पेसिफिकली ज़्यादा होंगे डिफरेंसेस। तो जिस तरह बताया था कि एक और स्टीरियोटाइप भी है कि मतलब जो साउथ के लोग हैं वो मतलब उसके कलर वाइज इस तरह उसने बताया कि मतलब वो बिल्कुल इस तरह नहीं है, क्योंकि जिस तरह कुछ एक्टर्स के पिक्चर्स दिखाए थे वो साउथ से थे, तो दे वर प्रिटी, दे वर गुड लुकिंग, दे वर वाइट। सो ये चीज़ एक स्टीरियोटाइप थी, मतलब लोग इस तरह समझते थे ये चीज़। और इसके अलावा जो कल्चरल जो एक वहाँ पर स्पिरिट होती है केलों के वाले से, जिस तरह फैज़ान ने जिक्र किया कि हमने एक और वीडियो पे रिएक्शन दिया है जिसमें हमने केरला को एक्सप्लोर किया है, उसके बारे में, लोगों के बारे में कि वो किस तरह इंथुजियास्ट है खेल के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में। तो ऑब्वियसली ये वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया। बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ जो वाइब्स है ना, जब आप साउथ में जाएंगे तो आप नॉर्थ को टोटली वो करेंगे, भूल जाएंगे। और जब नॉर्थ में जाएंगे तो
हर कंट्री में, हर इलाके में, हर जगह आपको वहाँ का खाना हर चीज़ डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे के हालांकि इवन दो ये जैसे कि इन्होंने कहा था, ये हालांकि ये एक ही कंट्री है, लेकिन जो एरिया है वो डिफरेंट है। और सिर्फ ये नहीं, और एक चीज़ मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने रिलीजन की बात नहीं की। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये कि मिसाल ये लोग यहाँ इतने लोग मुस्लिम्स हैं या यहाँ हिंदूज़ हैं, या इन्होंने इस बात की, क्योंकि जो सेक्ट्स होते हैं हम वो ख़ुद बनाते हैं। जो लोग होते हैं वो हर जगह हर कोई चाहता है कि वो अपनी कंट्री को हर हिस्से को जाने। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी इस तरह के हिस्से हैं जहाँ हम लोग नहीं गए, और लेकिन हम लोगों ने वहाँ की तारीफ़ें सुनी हैं, वहाँ का खाना, वहाँ के जो लोग सुने कि वो बहुत अच्छे हैं। तो हमें अपने ही कंट्री को डिस्कवर करना चाहिए, वहाँ के कल्चर को डिस्कवर करना चाहिए, फूड को डिस्कवर करना चाहिए। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इस तरह के हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और वीडियो, इस तरह के और वीडियोस को भी वो करेंगे, इस पे रिएक्शन देंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। हमारे वीडियो को पे कमेंट्स, लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।